Hello students, I'm a class 10 poem The Solitary Reaper explanation short question এবং long question complete କରିଛନ୍ତି। ଆଜି post reading exercise କରିବା ବହିରେ ତମର ଥିବା exercise କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ, let us write. The poet can't understand the words of the song, yet he raised several possibilities about its theme. ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ତା ଗୀତ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ସେ କାହିଁକି ନା ସେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସାରାଂଶ ଗୀତର ସାରାଂଶ କ'ଣ ସେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ। ଇନ୍ ଦି ଡାଇଗ୍ରାମ ବିଲୋ ଆର୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପସିବିଲିଟିଜ୍। ଆମର ତଳେ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ପସିବିଲିଟିଜ୍ ଅଛି। କ'ଣ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କ'ଣ ଆମର ପୋଏମରେ ଅଛି। ରିଡ୍ ଦି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 5 and 6 and find out the phrases that match each। ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ତଳେ ଫ୍ରେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଇ ମିନ୍ ପସିବିଲିଟିଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ପୋଏମରେ ଥିବା ଫ୍ରେଜ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ତମେ ଫ୍ରେଜ୍ଟା ଲେଖିବ। Work in pairs and complete the diagram, writing correct phrases in the blanks. One is done for you. ତମେ ମାନେ pairs ମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗ, ତମେ 2-4 ଜଣ ମିଶିବ, 2 ଜଣ ପେୟାର ମାନେ ଦଳ, ମାନେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କର। ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ, what is the theme of the solitary reaper song? solitary reaper ର song ର theme देखो, आमे ये जो डेथ और इलनेस ऑफ ए लव्ड वन, एवरीडे रूटीन इवेंट्स, ए डिजास्टर कैलामिटी इन द पास्ट, एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट, आर आमे कौन लिखिबा, पोएम रे थिबा फ्रेज आमे ताकू लिखिबा। ये जो तमर ब्लैंक स्थान दिया जाइछि। डेथ और इलनेस ऑफ ए लव्ड वन्स, हमरा बही रे कोन अछि, बही रे अछि old and unhappy far off things, हमारा पोएम रे ए जिनसटा अछि। आ बदल रे डेथ और इलनेस ऑफ ए लव्ड वन, एवरीडे रूटीन इवेंट्स, एवरीडे रूटीन इवेंट्स पई हमर अछि familiar matters, अच्छी हमर बही रे familiar matters अच्छी एवरीडे रूटीन पाई। डिजास्टर और कैलामिटी इन द पास्ट, सेटा कोन अच्छी ना नेचुरल सरो, एंड इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट, एटा हिस्टोरिकल इवेंट पे लिखा अछि। एंड इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, एटा कोन लिखा अछि हमर बही रे कोन अछि, battles long ago। ये जो व्हाट इज द थीम ऑफ द सॉलिटरी रिपर रे ये जो चारिटा हमर ऑप्शन दिया जाइछि, हमर बही रे थिबा फ्रेज गुडा को हम एग्जैक्टली पोएम रे थिबा फ्रेज को हम लिखले। तापर नंबर 4 देखो, हमर अछि द सॉलिटरी रिपर इज ए सुपर्ब panorama of events that slowly and silently glides one to the other। माने गोटी का परे गोटे एते माने ब्यूटीफुल पोएम सॉलिटरी रिपर, गोटे माने निहाती इंग्लिश लिटरेचर रे माने इंग्रजी साहित्य रे गोटे निहाती अनवद्य कृति। गिविंग बिलो ए ग्लिम्स ऑफ द पोएट्स लॉफ्टी थॉट्स अकरिंग इन द पोएम, पोएम कर पोएट कर थॉट तांकर चिंताधारा तळकु तळ हमर दिया जाइछि। बट दे मिस देयर सीक्वेंस तार मिस करा जाइछि, माने एक जगह 3 लिखा जाइछि, 3 जगह 5 लिखा जाइछि, एमिति ताकू आमे सीक्वेंस लिखिबा। 1 2 3 4 5 6 आमे लिखिबा। आगे सीक्वेंस आमे आगे गोटा पढ़ी दबा। फर्स्ट एटा कोन होछि, द पोएट्स गेस इज दैट द सॉलिटरी रिपर सॉन्ग कंटेन्स ए थीम ऑफ सॉरो, लॉस और पेन। बी होछि कोन, टचिंग टोन and melody of the song holds the poet mesmerized and spellbound। तापर सी रे कोन अछि, poet walks up the hill carrying the maiden song in his heart and head। The young farm worker sings to herself as she is reaping the corn। and is Wordsworth compares the girl song with the song of the nightingale and the cuckoo।
इटा आग पछ करके लिखा जाइछि सीक्वेंस कौन हबो देख पिले द यंग फार्म वर्कर सिंग्स हरसेल्फ एज शी इज रिपिंग द कॉर्न इटा हमरो प्रथम हबो पिले एम जति के पढिले एटा हमें हमरो प्रथम हबो एटा को हमें 1 करबा एटा हमें प्रथमे 1 करबा दिस इज 1 तापरे वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द गर्ल सॉन्ग तापरे वर्ड्सवर्थ को सुनिले सी जते बेले रीप करूथिला एवं सिंग करूथिला वर्ड्सवर्थ को सुनिले वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द गर्ल सॉन्ग विथ द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल एंड द कुको दिस इज 2 हला पिले 1 2 गला The poet walks up the hill carrying the maiden songs in his heart and head. देखो the poet walks up the hill माने लास्ट को सुनिला परे से लास्ट को गले एटा तेनु लास्ट हबो मार पांचटा अछि poet walks up the hill के तबे माने सुनि सारिला परे से गले तेनु एटा हमरो 5 हबो हला पिले The poet guess is that the solitary reaper song contains a theme of sorrow, loss or pain. Touching tone and melody of the song holds the poet mesmerized and spellbound. The poet's guess, poet तापर guess कले से कौन गाउछि दुखर गीत गाउछि ना साधारण दैनंदिन घटनार गीत गाउछि एटा हमर हबो केते केबे 1 2 5 जाइछि एटा 3 हबो पिले हमर 3 नंबर एटा हबो and this touching the tone and melody of the song holds the poet mesmerized and spellbound ताको सुनिला परे से चमत्कृत हो जाइछन्ते this is 4 एटा तमे करि पारिबो पिले तम बही रे एटा को very easily तमे करि पारिबो तापरे देख पिले एटा गोटे fill in the blanks दिया जाइछि given below is a description similar to your experience but some words phrases are missing आ भितरे मिस हे जाइछि माने ब्लैंक छाडी दिया जाइछि complete the description using the appropriate words phrases from the help box तळे हमर पिले दिया जाइछि तळे हमर help box दिया जाइछि एई थ्रू नै कि हम सेटा को फिल अप करबा देखिबा हाउ फार वी कैन डू इट हम करबा just now I was walking in a valley I saw a farm worker in the field she was singing by herself as she worked. I was so affected by her singing that तमर एठी अछि I stopped and listened. She had a beautiful voice which seemed to fill the whole valley. Dash was a sad one. The song was a sad one. I could not understand its word. Pile its words. But its plaintive tone and melancholy sound touched me greatly.
and its voice reminded me, its beauty, not voice, its beauty reminded me of the song of the nightingale and cuckoo bird. After some time I walked up the hill carrying the memory of the young woman's song with me. पिले एगुड़ाक सब तुम निजे प्रैक्टिस कले निजे जानी पारिबो। मु एटा को थरे पढ़ी देइथिली, तमरे एटा को पढ़ीथिली ब्लैंकटा को एवं तळे थिबा तमरो जो दिया जाइछि नोट्स जो वर्ड्स गुडा दिया जाइछि जहा साजरे हेल्प बॉक्स दिया जाइछि सेतरी जो वर्ड अछि ताकू मु पढ़ी देइथिली, तनु आई कुड मैनेज टू फिल इट ऑफ। तमे निजे बार बार करी प्रैक्टिस कले यू कैन डू इट, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, एते कष्ट नय पिले, तमे यू कैन डू इट। पिले आमे तमरो बही रे पोस्ट रीडिंग रे जहा एक्सरसाइज थिला इंपोर्टेंट एक्सरसाइज आमे ताकू कले, तेनु दी सॉलिटरी रिपर आमे कंप्लीटली आज सारिले। नेक्स्ट क्ले आमे नेक्स्ट चैप्टर रे जहा अछि आमे ताकू पढ़िबा। हला पिले आज रो क्लास इट रखुची, नासंता क्लास रे पुणी भेट हबो। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।